Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with the topic first. It was the 10th of September. The first topic is National Institution Ranking Framework 2021, which was recently announced by the Ministry of Education. Second, center set target for 50 more Udan routes. We'll understand which are the routes that government is going to explore. Third, BRICS-SIG inclusive intra-Afghan dialogue. Second last, MU variant, or you can call MU variant, that is the COVID-19 and its concern. And the last is an editorial, a win at UN high table. So this is an editorial from Indian Express. Apart from all the discussion of the news and editorial, there would be some MCQ based questions. और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे सो दैट इट कैन हेल्प यू इन द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन राइट सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड एंड दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू आवर चैनल do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. So starting the session with the first news, that is National Institutional Ranking Framework 2021. This is something which is very factually important for your prelims examination. They can ask you here and there a question. So you have to be you need to understand the concept, basically which sort of parameters are there, which rank, what are the categories of ranking. So these some of the minute factual details you need to understand. So this is something which is important for your general studies paper 2, issues related to development and management of education as well as human resource. So Ministry of Education has recently released NIRF 2021, short में इसको NRIF कहते हैं, that is National Institutional Ranking Framework. क्यों रिलीज की जाती है NRIF का क्या पर्पस है? NRIF basically evaluates and rank the top universities in India, right? So you have seen QW ranking or QS ranking which is there globally. तो इंडिया के लिए specifically NRIF को ranking, basically these are the parameters which was set by the Ministry of Education. So NIRF की जो ranking है 2021 की, that had been announced for 11 broad categories. So I will tell you which are the important 11 categories among which NRIF basically rates it. So these are the 11 broad areas upon which the ranking has been done. So top 6, here is the 6th category. This is the 5th category. So overall ranking has been given to the university. Basically what is the overall ranking in terms of all categories. Then there is a university level ranking, engineering ranking, management ranking, then we have pharmacy ranking, colleges ranking, the colleges, the performances, then some medical colleges, law colleges, architectures, dental and research colleges, right? So these are the complete categories or 11 categories upon which NRIF give their ranking. Now, what are the parameters for examination? This is important. From here also some question can be asked, but this is too lengthy, so I expect the questions to be framed from this section. कि what are the parameters, right? आपको बताना होगा कि parameters कौन-कौन से. So first parameter is teaching, learning and resources. ये पहली parameter है. दूसरी है that is research and professional practices. Third is graduation के outcomes क्या हैं? What are the benefits that student have get? Fourth is the outreach and inclusivity. And the last is perception. उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या perceptions है, how it is performing, whether they are coming to their benchmark or not. So these are the 5 important parameters upon which NIRF framework has been guided. Right? बात करें कुछ top schools या फिर institutions की जिनको ranking मिली है overall में. So first rank goes to IIT Madras. They have continued their ranking, followed by IISC Bangalore, Indian Institute of Science Bangalore, then IIT Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Roorkee, Guwahati. And if you talk about non-IIT, there's JNU, Jawaharlal Nehru University in Delhi, and Banaras Hindu University in Varanasi, that is in Uttar Pradesh, right? If you want to know the complete, basically the detail of the institution, I have provided that in the description link. Do check it out. Coming to the second news, that is center set target for 50 more Udan routes. So this is something which is important for general studies paper 2, government policies and intervention
for the development of various sectors. तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो एक रोड मैप बना रहे हैं जहाँ पे दे विल ट्राई टू इम्प्रूव द एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इम्प्लीमेंट की जाएगी विद इन 100 days, राइट. So approximately within 3 months they are trying to come up in action, and the visible target has been given for the 3 months. So these targets were set by the Ministry of Civil Aviation जिन्होंने confirm किया है कि 50 नए routes जो हैं that would be launched under the regional connectivity scheme known as उड़ान. उड़ान की जो tagline that is उड़े देश के आम नागरिक. I will show you an infograph and I will explain you there also. So the ministry has set an infrastructure and policy target जो कि implement की जाएगी by November 30. Now कौन-कौन से ऐसे 50 routes हैं that has been identified. So out of 50, 30 new routes would be launched by October. This is what the ministry has to say. और इन 30 routes में जो एयर अलायंस है एयर इंडिया की उसके साथ काम की जाएगी. विल लॉन्च द 6 न्यू रूट्स. इंडिगो स्पाइस जेट विल लॉन्च 4 न्यू रूट्स, राइट. So this is to basically make people enable so that they can have air travel, right. The people who cannot afford it can definitely will be able to afford this. So ministry has announced the new policy for maintenance, repair और operations के लिए. बेसिकली इसको MRO कहते हैं. MRO भी उन्होंने लॉन्च किया टू मेक इंडिया ग्लोबल हब. एंड ओपन टेंडर्स की बात की जाए तो 30-year कॉन्ट्रैक्ट थी एंड द रेट्स वे टू बी डिटरमिन्ड बाय द बिडिंग अमंग द चेंज प्रपोज्ड, राइट. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मोर प्राइवेट बिडर्स. सो दिस वुड बी समवेयर शॉर्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप and it calls for a lot more citizen participations, right. Why it called? Because the price would be affordable. Now this is a Udan scheme which actually started in 2016, right, and the tagline was that Ude Desh ke Aam Nagarik, right. And if you see when it started, the inception of Udan called for 70 airports to be connected. 27 currently served as airport, 12 currently underserved as airport, and 31 currently underserved airport, right. Unserved airport that is actually not functional. So these were the target that government has set. Accordingly, government is trying to cope up what target was set by them. Now, BRICS seeks inclusive intra-Afghan dialogue. This is something which is important for General Studies Paper 2, bilateral regional grouping and agreement evolving India and affecting India's interest. So recent में BRICS की meeting हुई है and this is the 30th meeting that was held in any time. They can ask you the number, right? Not in UPSC, but for other examination perspective, these number are important. They directly ask you what is the number, what was the meeting number, right? तो यहाँ 13th meeting number है जो कि virtually held हुई थी. और इस meeting में जो main topic जो dominate की है that is inclusive intra-Afghan dialogue, right? किस तरह से अफगान में स्टेबिलिटी को मेंटेन की जा सके उस पर पूरी फोकस थी. So the leader of 5 nations, although BRICS comprises of 5 important nations, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, right? तो साउथ अफ्रीका ने बाद में साउथ अफ्रीका was added later. It was not first initially the part of BRIC. It was only BRIC, right? साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया. And this meeting was chaired by the Prime Minister of India. So it would be also an important question for at least for the UPSC prelims. Which country chairs the 13 BRICS summit? So it would be the answer. Correct answer would be India chaired the 13 BRICS summit. Now some statement that coming from the Prime Minister. You can see the Prime Minister taking the chair of the BRICS summit, and they said that the meeting called for reconciliations and even stability in the Afghanistan. और जो एक्सटर्नल सेक्रेटरीज हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेंसस अफगानिस्तान शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर प्रॉब्लम इन द नेबरहुड, राइट, बिकॉज द तालिबान फोर्सेस इवन द अदर मिलिटेंट ग्रुप दैट इज एक्टिवली फंक्शन इन अफगानिस्तान रीजन दस कॉल फॉर अ ग्रेट कंसर्न फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, राइट. नाउ काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान पे बात की गई है. दिस वाज अ प्लान दैट वाज बीइंग discussed under the BRICS meeting. तो 5 member groups ने इसको adopt किया. This is counter terrorism action plan. और इसका कहना है कि BRICS के जितने भी leaders हैं they are setting up a situation where a peaceful basically जो
अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसको पीसफुली हैंडल किया जा सके। रिसेंट में वी हैव सीन जो हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे ब्लास्ट हुई थी, राइट, दैट हैज किल्ड ऑलमोस्ट 100 पीपल्स इंक्लूडिंग द यूएस मिलिट्री पर्सनल्स। और इसी डॉक्यूमेंट में बात इस डॉक्यूमेंट की जो नेमिंग की गई है, द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल फॉर द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट कॉल फॉर एड्रेसिंग द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन अफगानिस्तान। सो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू दिल्ली जो डिक्लेरेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। सो दिस इज फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, so that need to uphold the right of women, children and minorities. So India is of the opinion कि अगर तालिबान इन 3 important चीज़ों को जो issues हैं उसको अगर handle कर लेता है, so this would be the time that Afghanistan would prove itself, that Taliban would prove itself that their commitment to social work. Now कुछ other agreements किए गए हैं, like the agreement on remote sensing satellite conciliation between the space agencies. The summit also discussed the COVID-19 pandemic strategy to strengthen the counter-pandemic cooperation. Multilateral reform के बारे में भी बातें की गई है. So these were the other part that were discussed under the 13 BRICS summit. China ने अपना aid, basically they have provided some financial aid to Afghanistan. So recently China ने emergency aid के तौर पे $31 million दिए हैं अफगानिस्तान को to help Taliban to run the government, right? So as we know, China would definitely work on that side which is against India. So as of now, अगर बात करें तालिबान की, और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है which is led by Taliban is not actually favoring India. So that is a reason China चाहता है कि अगर वहाँ पे वो अपने लीडरशिप वहाँ पे क्रिएट कर सके अगेंस्ट इंडिया. सो दिस इज द रीजन, दिस इज द कंप्लीट रैशनल दैट व्हाई China is supporting Afghanistan, right? And the summit emphasized the importance of principle of non-interference. यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के बात की गई, जो डिस्प्यूट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, खास करके बात की जाए हर कंट्री को इस टाइम पे वी नीड टू मेक अ सिंक्रोनाइजेशन वेयर ईच एंड एवरी कंट्री शुड स्टैंड एंड दे कॉल फॉर द गुड गवर्नेंस इन अफगानिस्तान रीजन, राइट? Now, MU variant of COVID-19 and their concern. This is something which is important for General Studies paper 2, issues related to development and management of health. So, एक lineage B.1.621 जिसको नाम दिया गया WHO के द्वारा MU, और you can call it MU. So, MU is basically SARS-CoV-2 coronavirus that causes COVID-19 and it is considered as the variant of interest. I will tell you कुछ और ऐसे वेरिएंट्स जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं. वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से जो अपग्रेडेड चीज़ है, मैंने उससे जो ज़्यादा बेसिकली कंसर्न करती है, दैट इज़ वेरिएंट ऑफ कंसर्न. सो पहले जो फर्स्ट लेवल आती है दैट इज़ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. उसके बाद जब चीज़ें ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, ज़्यादा कंसर्न करने लग जाती है, सो दैट इज़ बीइंग अपग्रेडेड बाय टू वेरिएंट ऑफ कंसर्न. सो विल अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. So talking about the mu, this was first detected in South America in the Columbia city, right, in January 2021. तो वेरिएंट ऑफ जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. WHO ने कहा है जो VOI है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस लिस्ट सीन हैव बीन द जेनरिक चेंजेस जो कि प्रेडिक्ट की जा सकती है कि किस वायरस की क्या कैरेक्टर है, हाउ दे वुड रिस्पॉन्स, उसकी ट्रांसिबिलिटी किस तरह से है, डिजीज़ की सेवियरिटी किस तरह से है, इम्यून रिस्केप क्या करती है डिजीज़, डायग्नोस्टिक और थ्योरेपेटिक स्केप्स, राइट. सो दीज आर द क्राइटेरिया अपॉन विच अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड, और इस बेसिस पे ही उनको रैंक मिलती. सो ऑल वायरस म्यूटेट, अंडरगो चेंजेस ओवर द टाइम एंड दैट स्पीड अप द प्रोसेस, जहाँ पे वो स्केप कर सकते हैं वैक्सीन, मेडिसिन एंड कैन सर्वाइव. सो वायरस व्हेन म्यूटेट इट बिकम मोर लीथल एंड इवन we cannot predict that what size, how lethality, how severity it can be. So there are several SARS-CoV variant circulating globally. और म्यू की अगर बात करें, this is the 5th variant of interest monitoring by the WHO. This is monitored by the WHO. 4 ऐसे और कुछ variant of interest है जिसको पहले WHO ने रिपोर्ट किया हुआ है. सो वैसे 4 कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, अगर उसके नाम बताऊँ मैं आपको, दैट इज ETA, दैट इज B.1.52, ये मल्टीपल कंट्रीज में रिपोर्ट की गई थी. फिर है लोटा, दिस इज B.1526, वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स.
मेक श्योर आप ये सारे नाम याद रखेंगे. एनी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन प्रीलिम्स, राइट? Kappa was the first documented in 2020, and Lambda, this was the Peru variant, which was documented first in December. तो ये 4 ऐसे वेरिएंट है, एटा, लोटा, कापा एंड लैम्डा. सो ये जो है, ये लैम्डा जो ये 4 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में है, जिसको WHO ने May 31 को रिकॉग्नाइज किया था और नेम किया था. नाउ सम वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एडवांस्ड हो जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा जाता है. So variant of concern is demonstrated when increased transmissibility or virulence is there, जहाँ पे जो वायरस की effectiveness है वो और ज़्यादा dominate करने लग जाती है. So currently we have 4 variant of concern. कौन कौन से हैं वो? First is alpha, ये UK variant के नाम से भी जानी जाती है. Now it is present in almost 193 countries. उसके बाद है बीटा वेरिएंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साउथ अफ्रीका वेरिएंट, और यहाँ सबसे पहले साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट की गई थी. सो फार इट इज प्रेजेंट इन 141 कंट्रीज. उसके बाद है गामा वेरिएंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राज़ील वेरिएंट, और ये नवंबर 2020 में डिटेक्ट की गई थी, ये 91 कंट्रीज में. जस्ट टू टेल यू व्हाट यूपीएससी कैन आस्क यू, दे कैन रिलेट मैच द कॉलम विच वेरिएंट इज रिलेटेड टू विच कंट्री ऑफ ऑरिजिन. तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे. अल्फा है यूनाइटेड किंगडम से, बीटा है साउथ अफ्रीका से, गामा इज फ्रॉम ब्राज़ील एंड डेल्टा इज फ्रॉम इंडिया. सो दीज 4 नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन आस्क यू एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, राइट? सो यहाँ पे ये प्रेजेंट हुई थी एंड दिस इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज. और सबसे ज़्यादा हाईली ट्रांसमिबल वेरिएंट की अगर बात करें, जो वायरस सबसे ज़्यादा ट्रांसमिबल है, दैट इज डेल्टा वेरिएंट. एंड इसमें डोमिनेंट ऑफ स्ट्रेन पास गई थी इंडिया में, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवास्टिकेटिंग सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 विच अफेक्टेड कंट्री ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे दिस ईयर. सो अदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न वुड बी चाइना, दैट इज D614G, और मैंने आपको ये सारे वेरिएंट ऑलरेडी बता दिए, राइट? नाउ म्यू वेरिएंट की अगर बात करें, उसकी ट्रांसमिबिलिटी की बात करें, एक पेपर पब्लिश हुई थी recently that called for infection, genetics and evolutions, and that said that how the spike protein and amino acid changes are made, and this variant of mu become more lethal, right? So there's a changes in spike protein and amino acids, and these mutation have occurred in the 4 level. ये कुछ 4 इसके mutant हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे, seen as the mutant variant reported in the variant of interest, and these mutation are known to have वायरस के बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स और जो इंक्रीज ट्रांसमिबिलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये बेसिकली इफेक्टिवनेस दिखाई है. सो म्यू हैज़ 4 इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस, राइट? सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस. आपको इसके नेम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, दे वुड नॉट आस्क यू दिस नेम, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके 4 अलग अलग वेरिएंट है. नाउ अ विन एट UN हाई टेबल. This is an editorial from Indian Express written by Lakshmi Puri. She is the former Assistant Secretary at the United Nations and Deputy Executive Director at UN Women. So this is something which is important for General Studies Paper 2, important international institution agencies for their structure and mandate. So under this editorial, मैंने कुछ 6 ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. द फर्स्ट वुड बी प्रायोरिटी एरिया एट UN, हाईएस्ट नंबर ऑफ आउटकम, इंडियाज फोकस थीम. UNSC की जो रिजोल्यूशन है 2593 और 126, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू इन एग्जाम, ये किससे रिलेटेड है. ग्लोबल इंस्ट्रक्शंस टू तालिबान एंड कंक्लूजन, राइट? जो पूरी थीम है इस एडिटोरियल की, दैट इज इंडियाज परफॉर्मेंस एट UN. रिसेंटली इंडिया वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नॉन मेंबर शिप. 1 महीने के लिए इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली है, विच एक्सपायर्ड ऑन August ओनली. सो विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन दैट. So it was a historic and memorable August with the presidency in the United Nations Security Council. और 2011 में भी इंडिया ने प्रेसिडेंसी की थी इन द लीबिया. दिस इज ऑलमोस्ट 10 years डाउन द लाइन when the thing were repeated. तो जियोपॉलिटिकली एक अर्थक्वेक है, जिस तरह से अफगानिस्तान में सिचुएशन है दैट इज चेंजिंग, और इंडिया के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, बट बिकॉज इन द ग्लोबल लेवल वी हैव सीन द टर्मोइल दैट इज अफेक्टिंग द अफगानिस्तान. So India has passed with test with the flying color. This is what the editor has to say.
प्रायोरिटीज की बात करें, इंडिया की क्या प्रायोरिटीज रही यूएन में, तो इंडिया फोकस ऑन सेफगार्डिंग एंड एडवांसिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, जो ग्लोबल पब्लिक गुड है, काउंटर टेररिज्म है, पीस और सिक्योरिटी, ये कुछ फोकस एरिया थे, कुछ प्रायोरिटीज थे दैट इंडिया फोकसेस अपॉन, राइट। सो सपोज इफ यू आर राइटिंग इन एसे पेपर, राइट, तो आप ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड इफ यू आर राइटिंग इन जनरल स्टडीज पेपर 3 as well as in general studies paper 2 precisely in the IR section, make sure you utilize this, right? तो प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन ले डाउन किया where he said that the voice should be given to under representation in the new multilateralism. New multilateralism is a very possible essay topic which can be asked in examination, right? So he became the first PM that chaired and addressed the UNSC together. ऐसा पहली बार हुआ कि प्रेसिडेंटशिप भी मिली और चेयरमैन और जो एड्रेस भी करने का मौका मिला। एंड इंडिया ऑल्सो मोबिलाइज एन अर्जेंट मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी। नाउ हाईएस्ट नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर बात करें, इस बार की जो प्रेसिडेंटशिप रही इंडिया की, दे हैव डिलीवर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ आउटकम, दैट वाज 14। 5 फुल फ्लेज्ड रिजोल्यूशन लाई गई फॉर द कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, सोमालिया, मिडिल ईस्ट एंड माली। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के जो ऑपरेशंस थे उसके बारे में बात हुई है। 4 प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग वेस्ट अफ्रीका एंड सूडान, एंड 5 प्रेस स्टेटमेंट दैट रिस्पॉन्ड्स टू द रियल टाइम डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग काबुल एयरपोर्ट एंड द टेररिस्ट अटैक विच वॉज कंडक्टेड इन हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया की क्या फोकस थी, किस थीम पे इंडिया ने पूरी फोकस की अपने इस मीटिंग को, इस जो प्रेसिडेंटशिप रही है 1 महीने की, उसमें इंडिया ने फोकस किस चीज़ पे रखा था। सो इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज द इवेंट अराउंड 3 सिग्नेचर थीम। कौन कौन से थीम, जो 3 इंपॉर्टेंट थीम थे? फर्स्ट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेकेंड इज पीस कीपिंग फोर्स, एंड थर्ड इज काउंटर टेररिज्म टू बिल्ड a new international consensus, right? And the August 9 event has a path-breaking evolving the holistic concept of maritime security, जहाँ पे unclosed rules की बात की गई है, because we have seen the dominance of China in the South China Sea, which is not under the spirit of unclosed, उसकी laws की violation करता है। तो इंडिया ने कहा है कि इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, एंड एवरी कंट्री हैज टू अबाइड बाय द अनक्लोज्ड रूल। The outcome advanced Indian security interest while contributing the new international maritime security order, right? तो इंडिया की जो अपनी maritime security है, उस इंडिया ने अपने लिए, मतलब बेसिकली बात करें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं। इंडिया कॉल्स कि हर एक कंट्री को म्यूचुअली एक्सेस होनी चाहिए विच इज़ अंडर देयर जोन, एंड इट इज़ समथिंग विच कॉल्ड फॉर न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंटी, एंड इट कॉल्ड फॉर अ रीजनल इंटीग्रिटी ऑल्सो। नाउ यूएनएससी की रिजोल्यूशंस की बात करें, 2 रिजोल्यूशन पास किए गए ड्यूरिंग इंडिया प्रेसिडेंटशिप, दैट वाज 2593 एंड 1267। तो 2593 वाज बेसिकली रिगार्डिंग द तालिबान रूल अफगानिस्तान में, जो मिलिटेंट ग्रुप ने अभी अपनी फॉर्मेशन की गवर्नमेंट की, उसको लेकर के इट डिमांडेड कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो किसी भी तरह से किसी भी टेररिज्म को बढ़ावा देने में मदद ना करे, इट शुड नॉट गिव शेल्टर और ट्रेन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म, राइट। एंड यूएनएससी की जो 126 रेजोल्यूशन है दैट इंक्लूड लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं वो अफगानिस्तान में किसी भी तरह से फ्लरिश ना करें, राइट, उनके ऑपरेशंस वहाँ पे नहीं होने चाहिए। Now, global instruction that was given to तालिबान को ये कहा गया है कि वो अपने ह्यूमन राइट इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज़, इनके राइट्स को अपहोल्ड करे। इट शुड प्रमोट एंड इट शुड कॉल फॉर ट्रांसपेरेंसी, more and more participation from women, from children, and from minorities, allowing them to have a normal life. So this is what every country advocated with regards to the new Taliban government. और सारे पार्टीज ने कहा है कि ये इंक्लूसिव, नेगोशिएटेड और पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी, इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वुमेन्स की, जो कि बहुत टाइम से नहीं हुई है। रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है। एंड फ्रांस एंड यूके हैव वार्न्ड तालिबान, उन्होंने वार्न किया कि गवर्नमेंट शुड बी जस्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन। जो 2 रेजोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं 2593 एंड 1267, इन रेजोल्यूशन के बेस्ड पे ही तालिबान को जज किया जाएगा कि उन्होंने अपने इस पैरामीटर पे कितने खरे उतरे हैं, एंड वेदर दैट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू और नॉट, राइट। सी, तालिबान कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली,
बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, रशिया है, इंडिया है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है. इफ ऑल कंट्री कम टुगेदर, तालिबान इज नथिंग. So they cannot have a notion that they can rule the entire Afghanistan without any interference from the multilateral forum. Definitely there would be pressure. There would be always pressure from the country like France, UK, India, and even United States to ensure कि human rights, women, children और minority की right पूरी तरह से वहाँ पे बहाल की गई. कंक्लूजन की अगर बात करें, एट यूएनएससी मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स कंट्री थे यूएनएससी के, उन्होंने प्रेज किया इंडिया की प्रेसिडेंटशिप को. दे हैव एक्नॉलेज्ड कि एक वैल्यू एडेड की गई है इंडिया की तरफ से, दैट हैव बिल्डिंग द ब्रिजेस इन माइडेस्ट ऑफ पोलराइज्ड यूएनएससी डायनामिक्स, जहाँ पे ये कोशिश की गई है कि जो मल्टीलैटरल फोरम को स्ट्रेंथन किया जाए. Even there should be changes, a revamp in the permanent membership. India has still not got the UNSC permanent membership, which India always look forward for. So बात की गई है कि यहाँ पे भी changes करने की ज़रूरत है, right? So this was a conclusion from the recent UNSC meeting. Now coming to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C, and for second question, the correct option is again C. Today's MCQ, Bureau of Energy Efficiency, because many a times UPSC tend to ask the question on the offices. तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है, और जो प्रोविजंस है दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को बताना है. इट्स मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी प्रोग्राम एंड एरिया ऑफ द कंजर्वेशंस. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन below. Now consider the following statement about Malabar exercise. It is an annual trilateral exercise of navies of Indian, Japan and USA. The exercise is held alternatively in Indian and Pacific Ocean. So what you have to do, you have to just write the comment section which among the following answer is correct in the comment section down below. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.